go on. Perfect. All right. Good afternoon to all of you. Priya ma'am and Meenakshi, please make sure that the attendance is taken. Around 140, the attendance should be taken so that we know who have joined. Yes, sir, Okay. sure. Okay, sir. Uh, good, af- Good afternoon to all of you. Saturday afternoon. I think काफी लोगों के लिए लंच हो गया होगा या कुछ लोगों के लिए लंच होने वाला होगा. But thank you for Yes. joining in. Um, I would like all of you to be on mute. Uh, this is, I think, in the new year, 2023, this is an initiative that we have taken. We had this initiative of industry and mentor customized series, industry and mentor customized series uh, last last year. We did it successfully for 24 episodes. Somebody is not on mute. Can I get that person to go on mute, please? Govinda, uh, please go on mute. आपको ध्यान देना पड़ेगा मीनाक्षी, अगर कोई अनम्यूट करता है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू उनको म्यूट करिए एंड वीडियो बंद करिए. ध्यान देना इस जी बात सर. जी सर. पर. थैंक यू. So we did this activity of 24 episodes and it was काफी positive feedback मिला हमें. So we are initiating this activity once again because industry के लोग भी बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को, पर वो रैंडम एक्सपीरियंस शेयर नहीं होगा, बहुत ही कस्टमाइज्ड होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम, क्योंकि उसी को सुनने में फायदा है और उसी को सुनकर इम्प्लीमेंट कर पार्टिसिपेंट्स इम्प्लीमेंट करते हैं. And obviously participants are interested to talk to as many people as possible apart from their interacting with me and other people in the company. So welcome to this customized industry speaker series, and it's my honor and great pleasure to introduce to Chintan, um, to you all. Chintan, good afternoon, and thank you for accepting the request and over here to share the experience with our students who are all energized and excited to initiate their career in the world of finance as an analyst. Chintan, um, you can start the video now. You there, Chintan? You can start the video. Yeah, okay, I can see you. All right, you can unmute also. Um, Now, to all the participants, let me introduce Chintan sir to all of you. Um, he has done his BCom from Gujarat, and he has done his MBA from one of the colleges in Pune, and then from an intern in Karvi to today deputy manager in Big Four. He's in Deloitte. Um, Meenakshi, unmute Chintan sir. Meenakshi, unmute Chintan sir. हाँ, एक मिनट Uh, सर. so, as I said, from an intern in Karvi to deputy manager in Deloitte today, which is one of the big four, I think that's a journey. And ये एक ऐसी journey है जो जहाँ से मैं देखता हूँ, I think many students and working professionals also जो analysts नहीं हैं, they would like to know how to build this kind of journey, right? And so it's been 6 years that he has been part of this ecosystem. 4 years in Deloitte. So that's about Chintan. By the way, he's an avid photographer also, which is what is mentioned in the LinkedIn. So welcome Chintan on this platform. Thank you so much once again for giving us this time. To all the participants over here, Chintan sir will talk about, as you know, the topic. So I'm just setting up the context for him before I move out. The topic is how to be successful as a equity investment and credit analyst, how to be successful in your career. So once you join the company, what it takes to be successful for the first 2 to 3 years, right? That is the question. That is what will be answered by Chintan sir in 2 3 different manners.
in the form of gyan, in the form of his personalized experience, and so on and so forth. So we are at 1:35. Sir will speak for another half an hour to 35 minutes. I would request all of you to pen down your questions जब आप सुन रहे हो. Once the session is done from sir's side, you can ask questions to sir. That will be for 15-20 minutes before we wrap it up. This recording will be available. Attendance will be taken because attendance in town halls is an important factor for your performance. You all know that. Whether the town hall is with me or whether this is an industry speaker series, right? So great. Chintan, over to you. Thank you so much for all those who have joined. I hope the context is set up now. Over to you, Chintan, and all the best to all the participants. Happy hearing and happy learning. Yeah, first of all, thanks for introducing Rohit. So I would like to start with like very basically depicting my journey. So I'll say I belongs to Vapi. It's a small town in Gujarat where there's not a lot of facilities available. Later, I then thought of doing post graduation from Pune. So I went there. So यहाँ पे जो important चीज़ों हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि like from coming to a tier 3 city and then like doing my graduation in tier 2 city and then cracking the Deloitte and all. So it's not a very easy journey. Yeah. So you have to be very industry ready. You should be very clear in mind what you want to do, क्या करना चाहते हो, कहाँ पे like क्या क्या चीजें आपको फोकस like आपका फोकस क्या है and all. तो उसके बेसिस पे you can like think of like where you want to go, which all profiles you want to pursue for. There are a lot of profiles available in finance itself, like credit manager and all, and then yeah, at the same time equity research analyst, within equity research technical research is there, fundamental research is there. And then if I'll start like say something about my profile, it's more all valuations and financial modeling. So we generally build models on the basis of any transactions happening, like whether it's merger or acquisition is going on, whether it's fundraising model, whether it's PPA model or so on. So it's so at back जो मेरा टाइम था वहां पे जनरली हमको MBA and all से क्या मिलता है कि like we got to clear all of the basic concepts cleared. Yeah. So at that point मैंने थोड़ा सा एनालाइज किया कि मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ जाना चाहता हूँ. तो वहां मैंने नोटिस किया कि लाइक equity research or related to like finance, like investment banking or financial advisory और ये 2-3 profiles थे जो मुझे ज़्यादा interesting लग रही थी. So to become like to make yourself ready for that profiles, you have to surely have some additional skill sets with you. So if I give a small analysis, generally हमारे यहाँ अपने like India में 5,000 plus MBA colleges हैं, and then every year more than 4 lakh individuals are pursuing post graduations, and that is for MBA, like post PGDM, and then diploma courses are there. There is no count of it, and you know only 7% out of those get placements after their college, or they get job after their college. So it's not that easy in India. It's a very competitive market. कि आप like MBA किया and then directly you can pursue for a job. There are things which like what extra thing you bring to a table for the firm is more important. So if I'll take an example of mine, I was knowing that I want to pursue my career either in equity research analyst or investment banking or financial advisory. So I made myself ready. First, I choose 3 or 4 profiles which I am interested in, and then I like prepared myself by my own to get ready for those profiles, like learning technical analysis or learning fundamental analysis or doing some ratio analysis and all. And then खुद से ही मैंने like financial modeling and all prepare किया.
but like I Chintan was sir, reading through this. Chintan sir, Yeah, sorry to interrupt. Just give me 1 minute. मीनाक्षी अंशिका को म्यूट करो आप. The disturbance coming. Yes, sir. Done. आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? ध्यान रखो ना. Thank you. Over to you, Chintan sir. Sorry. yeah, no worries. So yeah, so then at that point, like there was no a lot of courses available to get yourself ready, the like industry ready. वो सब स्किल सेट्स हो हमारे पास, तो मैंने खुद से ही कुछ चीजें सीखी यहाँ वहाँ से, लाइक यूट्यूब करके और यो करके. बट आई वाज लाइक chatting with Rohit earlier, and then even got to know a brief understanding of the syllabus, and I saw that you are very lucky, like you are getting the opportunity to learn these skill sets directly in here, which are mainly required for industries. So yeah, the very basic tip from my side is to be like, be clear what you want to do, then make yourself choose what all profiles you required, like what all profiles you want to pursue for. और एक बार वो क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद देन उस सब प्रोफाइल्स के लिए क्या स्किल सेट्स चाहिए. अब आप देख रहे हो कि 7% लोग हैं जो जॉब के लिए मतलब लाइक रेडी हो पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इतना कंपटीशन है, सबको आता है डबल एंट्री सिस्टम, सबको आती है अकाउंटिंग, सबको बेसिक फाइनेंस की नॉलेज है. तो आप अलग क्या लेके आ रहे हो कंपनी के लिए? अगर आप खुद से अपने एक्सेल, एडवांस एक्सेल स्किल्स अगर डेवलप करते हो, अगर आप खुद से ही अपने लाइक अगर आप मतलब फाइनेंस में एडवाइजरी या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में करियर बनाना चाहते हो, इक्विटी रिसर्च में भी हमको मॉडल्स बनाने पड़ते हैं टू एनालाइज द कंपनी और टू वैल्यू द कंपनी और to see like how the purchase consideration look like in front of the net assets of the company. So उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक्सेल, फाइनेंशियल मॉडलिंग और जो भी टूल्स उस प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड है उसकी नॉलेज हो, तो आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पाओगे क्राउड में. सो दैट्स इज अ की और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन bring additionally into your CV, or say I'll say into your profiles. So like if I share my journey in the Deloitte, I got placed because मेरे पास मेरे को पहले से ही थोड़ा बहुत clarity थी on financial modeling. Now not very higher level. The Deloitte follows very high standards of modeling standards, and then like how to make a standardized model so that की input fill किया and then automatically outputs flow हो रहे हैं करके. But I had some basic understanding, so it created a very good impression in front of the interviewer. That yeah, at least he knows something else which we are actually doing in the practical life. So वो बहुत important role play कर देता है जब भी आपको interviews crack कर रहे हो, या कोई भी आप like industry कोई भी आप profile के लिए अपने आप को ready कर रहे हो, तो आप वो extra चीज क्या कर सकते हो. So when I joined the firm, so this is what from my end कि हम कैसे value add कर सकते हैं for the company or for the team. In addition, see on the job उनको सिखाना होता है, उन लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि या यू शुड नो ऑल द बेसिक्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, बट ये सब चीज जो एक्स्ट्रा स्किल सेट आप अपने साथ लेके आते हो, बीट कम्युनिकेशन, बीट this skill set like Excel, advanced Excel courses, like you know other VBA and Power BI stuffs, which is very advanced, but I'll not go too much into it. But yeah, ये सब आप लेके आते हो तो वो एक वैल्यू ऐड करता है उनके लिए कि हाँ he already know something about it, so he can do something on that. बट अब फिर उसके बाद आप एंटर कर जाते हो प्रोफाइल में, तो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हो और क्या क्या चीजें आप लाइक लुक इनटू कर सकते हो टू क्रिएट योर करियर इन अ वेरी राइटली वे, और द वे यू वांट टू अचीव योर गोल्स इन नेक्स्ट 3 or 5 years. So first, आप like try to network as much as possible, try to build relationship within the team, be proactive. So ये सब बहुत important factors होते हैं. But apart from this, try to understand what actually our team is doing. हम क्या उसमें हमारे एंड से वैल्यू ऐड कर सकते हैं. और अगर जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी प्रोफाइल का या मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं, व्हेन आई जॉइन डेलॉइट, आई गॉट टू नो कि या हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग कर रहे हैं, एक्सेल में मॉडल्स बना रहे हैं,
अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं जो फाइनेंशियल मॉडलिंग के रिलेटेड वीबीए से हम कुछ चीज ऑटोमेट कर देते हैं, और कभी कभी उन एक्सेल्स के आउटपुट्स पावर बीआई के अंदर एक्सट्रैक्ट करके विजुअली अपीलिंग डैशबोर्ड्स बनाते हैं फॉर सीनियर मैनेजमेंट। तो ये सब मुझे पता चला। तो then I by my own tried learning VBA, tried seeing all the videos and all, tried learning those dashboarding tools, so that कि जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई तो जब मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई तो मैं बहुत नया नया नहीं लग रहा था उनके लिए कि हाँ उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है मुझे सिखाने के लिए या बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। सो बीइंग प्रोएक्टिवली लर्निंग दो स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to to go ahead with it, and then create a very good impression in front of your senior, and then from your, so in short I'll say always keep your mindset in a way that there should be a learning approach, there should be a proactiveness जो practical life में बहुत important है। अगर मैं ये syllabus की बात करूँ तो इसमें मैंने जो थोड़ा बहुत देखा है, like we have ratio analysis, right, which is very important for any of the profiles related to finance। अगर हम इक्विटी रिसर्च में भी जाते हैं तो हमको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को एनालिसिस करके हम बहुत सारे इंसाइट्स पता कर सकते हैं कंपनी के लिए, हाउ द कंपनीज हेल्थ इज। सो रीडिंग द स्टेटमेंट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, like analyzing that statement and then like tracing those trends and patterns are more important. How you seeing those? So for that, ratio analysis or financial statement analysis is very much important. And every colleges in Indian system, as far as I know, there are very less percentage, or 10% or 5%, I'll say, are carrying on these skills, like are focusing on developing these all skill set apart from your curriculum. और जैसे एक्सेल में बहुत सारे बहुत वास्ट है एक्सेल, लाइक उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स मैच हो गया या सम इफ्स हो गए, एवरेज इफ्स हो गए, ऑफसेट्स हो गए, इतने सारे फंक्शंस हैं उसको यूज करके हम लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं या कंसिस्टेंट फॉर्मूला बनाते हैं यूजिंग फ्लैग्स एंड ऑल, ताकि तुमको मतलब फॉर्मूलास को टाइमलाइन में ब्रेक ना करना पड़े। तो उसके लिए ये सब चीजें आपको एडवांस में एक्सेल आती हो तो वो बहुत बहुत वैल्यू ऐड करेंगी। Apart from this financial modeling itself, how to set up or a structure a model for any of the industry, like though the financial modeling it seems to be a building 3 statement model, but it also has different structure as per the sectors, as per the structures, as well as per the industry, or also the term of the industry, like you are starting up or it's a well established company. On that basis valuations method as well decides। तो वो सब बहुत like आप सबको ये सब पहले से आता हो, आपने ये सब पहले से ही like सीख लिया है तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा to grow in your career as well as to get your first job in your plate। So that's all in terms of skill sets। और मतलब like always have a mindset to learn something, like आपको अगर सामने से ये सब कुछ मिल रहा है to learn, then grab that opportunity and then learn as much as possible। always question yourself कि the thing which I am doing is right or not, मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है कि नहीं। at the same time try to create your analytic mindset that ये हुआ तो ये, मतलब तुम अभी जैसे कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के 3 स्टेटमेंट्स है तो उसको नंबर्स तो सबको दिख रहे हैं, बट उस नंबर्स को एनालाइज कर रहे हो, एनालिटिकली सोच रहे हो कि ये ऐसा क्यों है, अभी ये इतना इसी ईयर में इतना स्पाइक क्यों दिख रहा है करके आप उसके बारे में सोचोगे, उसको आप बैक ट्रेस करोगे और उसके एजम्पशंस को सोचोगे कि हाँ यार कि ठीक है इस फैक्टर की वजह से हो रहा है, तो ये फैक्टर अगर doable hai and it makes sense, then that spikes make sense, but if not then there is something wrong with the company or with the numbers। so wahi like questioning yourself and then having those learning skill sets are very important in your career, in your skill set building। so that's main thing। apart from this,
yeah, apart from this, I'll say, कि आप हमेशा मतलब लाइक लुक बैक करो कि वो वो इंडस्ट्री में, जैसे आप, अब जैसे मैं अभी पावर बीआई का एग्जांपल लूं या एक्सेल का एग्जांपल लूं, तो अभी इसमें मार्केट लीडर कौन है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट इज द ओनली वन हु इज लीडिंग दिस थिंग, या likewise in power bi there are three major market leaders like ClickSense or power bi or power bi or Tableau. So वो वो चीज में जो मार्केट लीडर होता है वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज यूज कर रही होती है, ठीक है? और ट्राई टू रिसर्च एज मच एज पॉसिबल सो दैट कि आप राइट स्किल सेट, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न राइट स्किल सेट रेदर देन लर्निंग एवरी स्किल सेट, या सो आप ट्राई करो कि इंडस्ट्री डिमांडिंग क्या है। अगर मैं थोड़ा डेटा एनालिटिक्स साइड भी जाऊं, विच इज नॉट इन रिलेशन टू फाइनेंस, बट या वहां पे भी आजकल क्या हो रहा है कि पाइथन, आर, सीक्वल, ये सब कोडिंग्स बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल। जो पहले जो जावा स्क्रिप्ट आती थी या दूसरी सब जो लैंग्वेजेस आती थी, वो अभी लाइक गेट अवे हो रही हैं। तो if you will focus on C++ or Java, then it will not make sense. So industry is not using that anymore. They are now more into Python and R. So finding that right skill set which industry requires is important. Obviously this like Rohit is helping you to find those opportunities and the skill sets, and then getting you ready for this. So yeah, this ratio analysis, Excel skills, and then financial modeling, and then all the markets related things, for example, technical analysis and so on. So वो सब चीजों को आप अपने आप को रेडी करोगे उसके बेसिस में, तो it will help you to grow your career and face like get yourself ready well ahead rather than you are struggling throughout your job profiles कि हाँ मुझे लर्नर मतलब बहुत टफ हो रहा है ये सब सीखना। अगर आप पहले से आपको कुछ नॉलेज होगी उसके बारे में, तो इट विल बी वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस फॉर योर करियर rather than struggling around throughout the term period. So it will really help, yeah. So all that's all from my end. If you have any questions, surely you can reach out to me. All right. First of all, thank you so much, Chintan. I think half an hour afternoon spent like this is enlightenment for entire 3 months, I believe. So मैं आपकी बातों को, मैं पिछले आधे घंटे से आपको सुन रहा था, मैं हमारे सब पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार पैराफ्रेज करूंगा, एंड सो दैट यू नो वो डबल डोज हो जाएगा। आपने बोला एंड नाउ आई एम पैराफ्रेजिंग इट, इट विल हेल्प ऑल ऑफ देम टू रजिस्टर दैट यू नो इन अ मोर सीक्वेंशियल मैनर। So, so once again, thank you so much for these inputs. Now, let me paraphrase, and then it is open for everyone to ask questions. तो सबसे पहले चिंतन सर ने अपने जर्नी के बारे में बात की कि वो एक स्मॉल टाउन वापी से आए और विच इज अ टियर 3 टाउन, और आज वो एक बिग 4 में है। दैट इज वेयर फ्रॉम ही स्टार्टेड। And sorry for उन्होंने ये कहा, cutting you Rohit on this, yeah, but yeah, abhi I'm in international department, so I'm dealing with various geographies. So various Deloittes, we are connected to various Deloittes, like Deloitte UK, Deloitte Canada, Deloitte Europe, like Germany and all, Netherlands, and then Deloitte Middle East, where we are in line with them. So it's all about, so just I'm focusing on that part ki, like from starting my journey from a small town of Vapi to dealing all the international clients, it's very very fascinating for me, and I feel proud of sometime on that कि मतलब like कुछ किया है life में। तो yeah, so that's why I was mainly focusing on having that mindset कि मेरे को पहले से अपने आप को ready करना है उस चीज के लिए। So starting this journey and going it, like it's not कि आप मतलब like top 10 colleges से MBA करो तभी वो achievable है, या आप मतलब like tier 1 cities में रहते हो तभी वो possible है। Like if you have a right guidance, right skill sets, and then right mindset, surely you can reach out anywhere if you want to. Yeah, you can carry on, Rohit. वेरी वेल सेड। यू नो अगर देखो चिंतन सर ने ये आखिरी में 3 वर्ड्स बोले, राइट
guidance, right skill set, and right mindset. अगर I think the word is appropriate rather than right or wrong. If you have that kind of appropriate all these three things, guidance, skill set, and mindset, GSM हम बोल सकते हैं. I think that definitely helps you to achieve your dreams. मतलब वो फिर किताबी बातें नहीं रहती कि बड़ा सोचो बड़ा हो सकता है, वो एक्चुअली में हो सकता है because you need to have these three letters GSM, right? So coming back to what Chintan sir said, so one is obviously his journey. That's number one. Number two, he did mention about कि कॉलेज में जो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे पार्टिसिपेंट से, हमारा इकोसिस्टम ऐसा बना हुआ है, नथिंग राइट रॉन्ग, बट इकोसिस्टम इज लाइक दैट कि अगर आप टीयर 1 कॉलेज में नहीं हो तो आपको पता है कि आपको डिग्री मिल रही है, राइट, एज सिंपल एज दैट, एंड डिग्री के साथ आपको स्किल खुद लेने पड़ेंगे. तो अगर खुद लेने पड़ेंगे तो या तो आप सेल्फ मोटिवेटेड हो या आपको गाइडेंस लेना पड़ेगा, और वो गाइडेंस ऐसा होना चाहिए जो आपको स्किल डेवलप करके दे, ना कि सिर्फ नॉलेज. Now, guidance can be from YouTube, guidance can be from Udemy, guidance can be from anywhere else. But the point over there is वो guidance में knowledge कम, मतलब knowledge तो base है, knowledge के साथ साथ आपका skill development होना चाहिए, तभी जाके आप अलग दिखोगे. जो सर कह रहे थे, अलग दिखोगे बाकी लोगों से भी. जैसे सर ने कहा अकाउंटिंग सबको आती है, डबल एंट्री सिस्टम सबको आती है, या सबको पता होता है, सुना होता है, पर आपको क्या अलग आता है और वो दिखाना जरूरी है when you are sitting for your first job, more or less as an analyst profile, because कंपनी का एक्सपेक्टेशन यही है कि हमें रेगुलर स्टूडेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट वे नहीं चाहिए. हमें उन्होंने तो वो डिग्री है, उनको ही पता है, कंपनी को भी पता है कि वो डिग्री है, पर डिग्री के साथ वो ला क्या रहा है, राइट, एंड यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट. उन्होंने एक वर्ड यूज किया था चिंतन सर ने, कम्युनिकेशन. यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस दैट, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ये दूसरी पॉइंट उन्होंने बोली. तीसरी पॉइंट उन्होंने बोली, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना हो, कि कंपनी में चले गए तो पहले 3 साल करियर को बिल्ड करने के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए हो. उन्होंने पहली बात बोली नेटवर्किंग. यू नो, एक कहावत है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, ये कहावत है. और वो आज की तारीख में पता चलता है आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से, राइट. आपने कितना पैसा कमाया वो नेटवर्क नहीं है आपका, आपका नेटवर्क कितना बड़ा है वो आपका नेटवर्क है. फंडामेंटली दैट्स द होल माइंडसेट, राइट. और उसी बात को चिंतन सर ने बोला कि आप जब कंपनी में गए, उन्होंने 3 बातें बोली. एक बोला नेटवर्किंग, उसके बाद उन्होंने कहा कि रिलेशनशिप बिल्डिंग. आपने नेटवर्किंग की, आपने अब रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होता है? ट्रस्ट. ट्रस्ट इज द बेस फॉर एनी रिलेशनशिप. नाउ हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट इन प्रोफेशनल एनवायरनमेंट? तीसरी बात उन्होंने बोली, व्हेन यू कैन थिंक प्रोएक्टिवली. हमारा टीम क्या कर रहा है, मेरी टीम क्या कर रही है, मेरी टीम क्या कर रही है, और मैं उस टीम में और क्या कर सकता हूं टू हेल्प माय टीम. उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली. उन्होंने ना इंडिविजुअल पे बात नहीं की, उन्होंने कहा टीम, क्योंकि आप तभी ग्रो करोगे जब टीम ग्रो करेगा. इट्स वेरी सिंपल. आप तभी ग्रो करोगे जब टीम ग्रो करेगा, और जब टीम ग्रो करेगा आप इसलिए ग्रो करोगे बिकॉज यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट द टीम टू ऐड वैल्यू टू द होल एनवायरनमेंट इन दैट टीम. और इस बात को उन्होंने हाईलाइट किया ये बोलते हुए कि जब आप एंटर कर रहे हो कंपनी में, तब आपने बताया मेरे पास डिग्री है प्लस मेरे पास ए बी स्किल्स है, ठीक है, एंटर हो गए. फिर आपने सोचा कि ये टीम, जैसे सर ने कहा कि मैंने पावर बीआई, जब मैं कंपनी में आया तब मैंने देखा कि इन लोग पावर बीआई या वीबीए जैसे काम भी मेरे पास आ सकता है आने वाले दिनों में, तो मैं अपने आप से पहले तैयार हो जाता हूँ. So it is like I am upgrading myself and I am keeping my learning hat open always. जैसे I think इस स्टेटमेंट में ना मुझे वो स्टेटमेंट याद आता है, stay hungry, stay foolish. रश्मि बंसल का वो स्टेटमेंट याद आता है, और वो एकदम एप्ट स्टेटमेंट है, stay hungry, stay foolish, right? तो वो बात बोली चिंतन सर ने कि आने वाले दिनों में क्या आ रहा है, अगर आप अपने आप को तैयार करो तो कंपनी को ये नहीं लगना चाहिए कि बहुत वक्त जा रहा है इसको ट्रेनिंग देने में. See, one thing is for very sure, and I'm sure Chintan will agree to this, that in today's time, in the digital economy, the training mindset of the companies have reduced a lot, which means the company wants a student to perform for more or less day one, क्योंकि उनको बिलिंग स्टार्ट करनी है. उनको ये नहीं देखना है कि स्टूडेंट बैठा हुआ है 6 महीने तक और उसके बाद बिलिंग स्टार्ट हो रही है. Nobody wants that, right? So I think this point was also very apt. And finally, जो
जो चिंतन सर ने कहा बिफोर आई ओपन द प्लेटफॉर्म फॉर द क्वेश्चंस, उन्होंने ये बात कही कि you have to think proactively. You have to think about what's happening in the industry. और उन्होंने एक वर्ड बोला, रिसर्च बोला हूँ कि ये करते रहना पड़ेगा. रिसर्च सिर्फ नौकरी के लिए नहीं होता है. अगर करियर बनाना है तो नौकरी में जाने के बाद भी आपको क्या क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, आपको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा. और उस पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात बोली, जो उन्होंने सिलेबस के बारे में बोली, स्किल्स के सिलेबस के बारे में उन्होंने 3-4 पॉइंट्स उठाए. एक रेशियो एनालिसिस उन्होंने उठाया, फाइनेंशियल मॉडलिंग उठाया, एक्सेल प्रोग्राम उठाया. दैट दीज आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ऑन अगर किसी को इक्विटी, क्रेडिट या इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट प्रोफाइल में आना है, इंक्लूडिंग somebody has a dream of getting into Deloitte as a big four, right? So thank you, Chintan sir, thank you so much for these points. I hope I have paraphrased you pretty well. If I missed out any point, you can obviously add. But I think this is what you told in 30 minutes, and I think these are very very apt points, very points which are ये एकदम ये ना मतलब मैं बताऊं, ये एकदम ग्राउंड वाली बात है, ये हवा वाली बातें नहीं है. मतलब जिसने किया है वही ये सब बोल सकता है. And since you have done that, and that's why the points are so grounded and so heart to heart, right? So great points, Chintan sir. Let's open the platform for the questions. So all the participants over here, happy to get your questions. Let's put your questions in the chat box. And Chintan sir is there with us for another 15-20 minutes to answer your queries. I am also there. अगर मुझे कुछ add करना होगा, definitely I will be happy to add that. Open to all the students for the questions in the chat box, please. You can ask any question. आपको it's an unfiltered session. इसमें आपको filter करने की जरूरत नहीं है, right? So I think Jatin has started. Fund manager बनने के लिए क्या road map होगा? So yeah, fund manager is more about like first हम लोग को surely कि हमारे पास क्या skill set होने चाहिए उसके related. एक तो हमको like technical analysis और fundamental analysis की knowledge होनी चाहिए. So yeah, if you will try to learn more about fundamental analysis and technical analysis, it will help you to like analyze companies on the basis of these two parameters. And then apart from this, you can just like fund manager is a very big word, I'll say, and it's not like कि हम enter किए और fund manager बन जाएंगे करके. You will have to start as an analyst and then yeah, try to do proper research, fundamental research or technical research, and then accordingly start building report, right? Like start building your skill set as a like you should know how to do report writing. You should know how to build models so that on the basis of those model you can do valuations of that company. Like it's generally हम public listed companies का value को buy या sell करने के लिए recommend करते हैं, तो उसके लिए हम ये सब करते हैं. तो हम लोग को Excel financial modeling आनी चाहिए, report writing आनी चाहिए, ये दो more important things हैं. And then आपको technical research और like technical research और fundamental research करनी आनी चाहिए. तो यहाँ से आप अपना analyst का career start करोगे. Analyst का career start करके आप like equity research analyst or technical research analyst, whichever way you want to go ahead and on. And then once you create your like create your existence in the market, surely जो बहुत सारे funds होते हैं, म्यूचुअल फंड्स जैसे हम जानते हैं, तो उसके अंदर लाइक ये सब फंड मैनेजर्स होते हैं जो अपने लाइक पब्लिक का फंड मैनेज करते हैं टू ग्रो देयर इन्वेस्टमेंट्स. सो after 10 years or 12 years of experience and those creating those impact in the market will help you to take you to your career. But yeah, आपको ये फैसिनेट कर रहा है तो आप मतलब, लेकिन मेरी पर्सनल एक एडवाइस होगी कि आप एक ही चीज पे फोकस करो, लेकिन सॉरी 2 या 3 चीज पे फोकस करो उसके रिलेटेड, so that you have more vast options available in the market. And yeah, create your skills which I mentioned, and then it will help you to achieve your goals. Yeah, sure. Sure. I will pick up the second question because it's a very generic question. हिमांशु, ये सवाल का जवाब मेरे ख्याल से 10 बार दे चुका हूं मैं, but still आपने ये सवाल पूछा है तो मैं दोबारा आपको बोल देता हूं. How to start a career being as a financial analyst? I think it's a very generic question. आप प्रोग्राम ही वही कर रहे हो स्किल एज में जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बनाता है,
right? So how to start a career? Obviously, get the skills, apply to the program, and then you start your career as a financial analyst. So I think आप अगर आप ये पूछ रहे हो how to start a career as a financial analyst in Deloitte, I think the answer remains the same. So I think that's an answer, Himanshu, to your question. विवेक, फ्रेशर वालों के लिए कैंपस सिलेक्शन कब से होगा? आई थिंक दैट्स नॉट द फोरम फॉर आस्किंग कैंपस सिलेक्शन कब से होगा. एंड जो सर है, चिंतन सर है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टैलेंट एक्विजिशन ऑफ एचआर. he may be aware obviously कि Deloitte का कैंपस सिलेक्शन कब होता है, बट my suggestion is this is not the forum to ask a campus selection question. ठीक है, अगर आपको उस रिलेटेड कुछ सवाल है, आप डेफिनेटली मुझसे सेपरेटली बात कर सकते हो. बट चिंतन, एनीवे, डू यू हैव एनी आइडिया कैंपस सिलेक्शन कब होता है? So generally, like around October or November, they come for a campus placements, and then Sure. once they selected, they join the firms around May or May June once they complete their MBA program. So that's the case. Yeah. Because I think the similar question is Gunjan Tiwari का भी है, internship के लिए कैसे apply करें? I am assuming it is for Deloitte only. Do you have any idea internship के लिए कैसे apply करें? मेरे हिसाब से obviously it is through the website only. There is no other way fundamentally. Yeah, and to be honest, like in Big Fours, they generally hires articles for that to like say CAs and all. So ये सब और in case अगर उन लोग करना भी चाहे तो like 6 months का internship offer करते हैं, which is too long from the perspective of MBA. Generally Big Fours का 3 weeks से 4 weeks का training period होता है, तो उतने में most of the period of internship खत्म हो जाती है जो slot for MBA होता है. तो इसलिए they generally does not prefer MBA unless and until it's for 6 months or something. Yeah. There are a lot of other companies who do so apart from Big Fours. So yeah, surely you can reach out to them. And then main thing. And obviously, yeah, please go ahead. Sorry. Yeah. Go ahead. And then yeah, internship to mainly is about getting that experience which is related to your profile. Doesn't matter from which company it comes in. Yeah. Got it. तो मैं आकर्ष का, अर्पित का और कृष्णा का ना सवाल कंबाइन करके आपको पूछता हूँ. उनका सवाल है, आई वांट टू बिकम इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड देयर आर पोस्ट लाइक फाइनेंशियल एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट एंड क्रेडिट एनालिस्ट. व्हाट पोस्ट विल हेल्प मी टू गेट एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? ये जवाब वैसे पहले इनको दे दिया गया है, बट फिर भी यू कैन ऑब्वियसली आंसर दिस क्वेरी. अर्पित का भी सिमिलर. सो द क्वेश्चन इज, फंडामेंटली द क्वेश्चन इज, देयर आर मेनी एनालिस्ट प्रोफाइल्स which are there, right? Like equity analyst and financial analyst and investment analyst. So or credit analyst, for example. So what post will help me to get in investment banking? That is the question, right? So out of these profiles, मुझे कौन से प्रोफाइल में होना चाहिए? अगर मैं आकर्ष हूं तो मैं ये पूछ रहा हूँ, इन प्रोफाइल में से कौन से प्रोफाइल में होना चाहिए जो मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की तरफ ले जाएगा? So this answer has been given before, but I'm sure you can also add to it. It is given before in various village platform, but I would like you to also answer this. अर्पित का भी सवाल सिमिलर है, वो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड है. तो उसने पूछा है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में जाना है, which is again a part of obviously investment banking, तो मेरे को कौन से टूल्स मास्टर करने पड़ेंगे? And the same सवाल is by Krishna. So now you can answer these three together. Sure. Okay. सो इन्वेस्टमेंट बैंकर का मेनली रोल क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें उन लोग सपोर्ट करते हैं टू फर्म. अगर कोई कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर रही है या कंपनी कोई किसी का बहुत बड़ा फंड रेज करने के, या फंड लाइक बाई साइड और सेल साइड इक्विटी कोई भी साइड हो सकती है, लाइक बाय द, सो उसमें उन लोग हेल्प करते हैं टू रन दिस ट्रांजेक्शन स्मूथली. तो इट्स मेनली अबाउट so like it's mainly about finance and all. Yeah, you should know all the concepts of financials and taxations का भी रोल आ जाता है, ये सब आ जाता है. तो ये आपका एक करिकुलम के पर्सपेक्टिव से ये आ जाता है कि हाँ, you should know all those things, and if you want to get there, so obviously you can start your career with any of the analyst role apart from credit one. It's more about credit one is more about banking thing, but yeah, जो भी अपना ये फाइनेंशियल एडवाइजरी हो गया, कंसल्टिंग हो गया, ये हो गया, यहाँ से यू कैन स्टार्ट योर करियर और एंड देन यू कैन रीच आउट टू योर गोल्स अकॉर्डिंगली आफ्टर लाइक हैविंग दोस स्किल सेट्स व्हिच रिक्वायर्ड फॉर दैट. एंड साथ में और स्किल सेट्स के पर्सपेक्टिव से से कि यू शुड नो कि आप लाइक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हो और आपको एक्सेल में सब
एक्सेल अच्छे से आता हो. एक्सेल इज द कोर फॉर एनी ऑफ द फाइनेंस रोल. एक्सेल तो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आप फाइनेंस फील्ड में हो तो. ठीक है. सो एक्सेल, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड देन बिल्डिंग अगेन या मॉडलिंग. सो मॉडलिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एवरीवेयर, क्योंकि ये सब रोल्स हैं जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते हैं तो उनके सब स्टेट, उनके जो जो भी उनके फाइनेंशियल्स होते हैं उनको हम प्रोजेक्ट करते हैं, फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग उसको वैल्यू करते हैं और उस वैल्यू के बेसिस पे हम आईपीओ लॉन्च करते हैं कि हाँ इसका लाइक फेयर मार्केट वैल्यू ये होनी चाहिए करके. तो अगेन द सेम स्किल सेट्स आई से इम्पोर्टेंटली फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको लाइक फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए. एक्सेल आएगा तो फाइनेंशियल मॉडलिंग आएगी, तो एक्सेल आना चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए एंड देन एनालाइजिंग द स्टेटमेंट्स एंड देन ऑल द बेसिक्स नॉलेज एंड ऑफ द अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. Got it. Got it. Got it. Thank you. The next question, Yogi Raj, मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया. Where should I be in 5 years in my domain and what position should I be at, sir? पहले तो आपका पहला अभी क्या कर रहे हो आप और आप क्या करना चाहते हो, तो आप 5 साल में कहाँ रहोगे? आई थिंक इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन. अगर आपको अपने सवाल को पूछना है तो थोड़ा सा उसको जरा स्ट्रक्चर करिए सवाल. There is one question from Komal. What skills required for fundamental analysis? What skills required to be fundamental analysis? Okay. I'll you will be like कि सबके सेम रिप्लाईज क्यों आ रहे हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि आप चार्ट पैटर्न्स, कंपनी के चार्ट पैटर्न्स को आप एनालाइज करो. उसके अंदर आप यू शुड नो कैंडल स्टिक पैटर्न्स, यू शुड नो ट्रेंड्स एंड ऑल. तो ये पूरा वॉल्यूम और डिमांड का खेल होता है कि लोग कितने लोग उसमें बाई सेल का ऑर्डर डाल रहे हो, उस हिसाब से चार्ट कैसे मूव कर रहा है किसी कंपनी का. सो दैट्स टेक्निकल एनालिसिस. एंड fundamental analysis is a very like checking the health of the company that can, so mainly it's analyzing the statements of the firm. तो अब जो भी मतलब लाइक लिस्टेड कंपनी है उसको हमने अपने उसका डेटा ट्रेस कर लिया. ट्रेस करने के बाद आप उस डेटा को उस डेटा को एनालाइज करोगे तो रेशियो एनालिसिस के थ्रू आप उसकी हेल्थ चेक करते हो. हेल्थ इन टर्म्स ऑफ लाइक उसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है इन टर्म्स ऑफ डेट के रिलेटेड उसकी चीजें देखना. फिर उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ऑल क्या है, ग्रॉस मार्जिन्स क्या है. तो ये सब चीज कैसे आप एनालाइज कर सकते हो? रेशियो एनालिसिस. सो यू शुड नो रेशियो एनालिसिस, जिससे आप उसके अलग अलग टाइप की हेल्थ को मेजर कर सको और उसके रिटर्न्स को ऑब्जर्व कर सको कि उसका मतलब लाइक रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सब कैपिटल रेशियोज है. बट सी इसमें भी मेन चीज है कि फॉर्मूलाज तो सबको आते हैं. फॉर्मूलाज तो गूगल पे भी मिल जाएगा कि आप टाइप करोगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है या डेट्स डीएससीआर का फॉर्मूला क्या है. बट उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि डीएससीआर इज मेनली लाइक कि उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल्स को मिला के वो उसके प्रॉफिट्स लाइक जो बिफोर इंटरेस्ट और जो कंपोनेंट वाला प्रॉफिट होता है वो सफाइस कर पा रहा है कि नहीं, वो मीट कर पा रहा है कि नहीं. अगर वो मीट कर पा रहा है और देयर इज द मल्टीपल इज हाई, दैट मींस कि कंपनी स्ट्रांग इनफ टू पे ऑफ देयर डेट्स एंड इंटरेस्ट लाइक प्रिंसिपल पेमेंट्स. So yeah, so you should know ratio analysis and you should know financial statement analysis and then you should know report writing so that कि आप वो fundamental analysis कर पाओ किसी एक But frankly speaking, आप वो सारी चीजें बोल रहे हो जो obviously आपने देखा भी है, ये सारा चीज प्रोग्राम का हिस्सा है. अच्छा, बाय द वे एक चीज और इसीलिए शायद वो आंसर्स बार बार वही आ रहे हैं जैसे चिंतन सर ने बोला. अच्छा, बाय द वे देयर इज वन कॉमन पॉइंट व्हिच आई मिस्ड आउट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ चिंतन सर. आई रियलाइज राइट नाउ चिंतन सर को भी एक टाइम पे अंकित सर ने पढ़ाया था. So Ankit sir is the, as you know, Chintan, Ankit sir is the product head of and the senior mentor for this program. That's also a common point for all the students who are getting trained by Ankit sir. I think that's also a very interesting commonality among all of us, right? Yeah. Great. एक सवाल है, एक और सवाल है कि सर मैं बीबीए से हूँ, मैंने एमबीए मुझे करना नहीं है अभी, लेकिन क्या मैं बिना एमबीए करके इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड में जा सकता हूँ? मेरा आंसर उसमें ये था, एंड यू कैन ऑलवेज ऐड, इट्स नॉट अबाउट द डिग्री एनीमोर. अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, यू नीड टू हैव अ रेलेवेंट स्किल सेट. वंस यू गो इनटू अ रेलेवेंट स्किल सेट, यू डेफिनेटली विल गेट इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रूट, बिकॉज हर रूट स्टार्ट होता है एनालिस्ट से, हर रूट स्टार्ट होता है रेशियो एनालिसिस, मॉडलिंग एंड एक्सेल से. अगर आप सी एट द एंड ऑफ द डे, जो अभी चिंतन सर ने भी कहा, यू कैनॉट लर्न एवरीथिंग 100%.
बट यू नीड टू आइडेंटिफाई 2-3 थिंग्स जो उन्होंने बोला है बार बार. 2-3 चीजें पकड़ लो, 2-3 चीजों का वर्किंग नॉलेज आना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट आना चाहिए, जो बार बार फोर्स किया जा रहा है एवरी लेवल. Am I right, Chintan? You want to add something? Yeah, absolutely. The only difference मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यही डिफरेंस होने वाला है इसमें कि अगर आप बीबीए या जो भी मतलब लाइक ग्रेजुएशन के बाद आपके पास राइट स्किल सेट है तो ऑब्वियसली आप वो शोकेस कर सकते हो अपने सीवी में, और वो नॉलेज चेक होगा तो ऑब्वियसली आपको आता होगा तो सब दिखेगा, तो यू विल बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू. डिफरेंस इतना ही होगा कि इफ यू आर एमबीए देन यू आर गोइंग टू जॉइन एज एन सीनियर एसोसिएट, उसकी जगह आप एसोसिएट में ज्वाइन हो गए, एसोसिएट में जाओगे एंड देन जो 2 years का कोर्स होगा उतने में आप सीनियर एसोसिएट भी बन जाओगे. तो लाइक द पाथ इज सेम, द मेन थिंग इज लाइक यू हैव द राइट स्किल सेट और नॉट, दैट्स इंपॉर्टेंट. दुर्गेश ने सवाल पूछा था पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए क्या स्किल चाहिए. मेरे ख्याल से वो जवाब आप दे चुके हो. तो आपने फंड मैनेजर का जो जवाब दिया, आई थिंक दैट्स द सेम आंसर. एंड उन्होंने सर्टिफिकेशन पूछा है. मेरे ख्याल से सर्टिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल्स. कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपको वो स्किल्स दे रही है, स्किल्स नॉलेज नहीं, जो आपने बोला है, आई थिंक दैट शुड सफाइस. Also, one more thing, like अगर आप ये पोर्टफोलियो मैनेजर या कुछ भी बनना चाहते हो तो everything will start from the analyst only, from where either a technical research analyst or a fundamental research analyst. बट इसमें आपका इंपॉर्टेंट चीज होगी कि आप रेगुलेटरी के बेस पे कोई सर्टिफिकेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं उसका आप थोड़ा सा स्टडी करो, जिससे आप पहले से रेडी हो. जैसे NISM है जो NSE का एक मतलब एक सर्टिफिकेशन कोर्स है which is mandatory to sit on the portal for derivative research and all. Likewise अगर आप कुछ buy sell recommendations दे रहे हो तो फिर आपके पास इक्विटी एनालिस्ट का एक मतलब एक कोर्स है NISM में, या यू कैन लुक आउट आफ्टर दैट. तो ये दोनों चीज मैंडेटरी है फ्रॉम NSE, तो दैट शुड बी देयर बिफोर ओनली. सो आपके पास वो पहले से होगी, आपने वो क्लियर किया होगा सर्टिफिकेशन, तो आपको श्योरली एनालिस्ट का रोल क्यों नहीं मिलेगा. बट या यू शुड नो ऑल द related, like you should have skill set and knowledge in pertains to that as well. Yeah, correct. एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे ये सवाल इंटरेस्टिंग लगा, भानु प्रताप का है. आई वांट टू पिक अप दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है. सबको लगता है कि पढ़ाई मतलब दिस थिंग्स आर वेरी, आई एम श्योर सबको लगता नहीं है, बट मुझे इट्स नॉट दैट हम जो जितनी बातें कर रहे हैं ये पता भी होगा काफी लोगों को, बिकॉज सुनते रहते हैं वो स्किलेज में भी और आपसे भी सुन रहे हैं. लेकिन आई थिंक वो रीइंफोर्स हो रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे दीस आर नॉट इजी थिंग्स. इसके लिए मेहनत लिटरली करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ेंगे. एब्सोल्युटली. उसी से रिलेटेड एक सवाल है भानु प्रताप का. आई लाइक द क्वेश्चन. व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज यू फेस्ड एज अ फ्रेशर इन योर फर्स्ट फाइनेंस जॉब? आई लाइक दिस क्वेश्चन. See, like coming from a small town, communication was very good from my end, but communicating in English was the challenge for me. So generally बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप like बहुत easily inline नहीं होते, but if you have very clarity on mind कि हाँ मेरे को ये करना पड़ेगा और इसके लिए ये सब चीजें आनी चाहिए. जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है या फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, तो तुमको फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए. तो आपको उसके लिए लाइक टाइम देना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज, कि मुझे हाँ ये पढ़ना है, ये करना है, वो करना है. तो जो भी चैलेंजेस मेरे लिए चैलेंजेस थे, माई कम्युनिकेशन, एंड देन ऑब्वियसली मेरे को कुछ नहीं पता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, तो मैंने मतलब रिसर्च किया और उसके बारे में पढ़ा और पता किया, और फिर मैंने मतलब लाइक टाइम दिया, स्पेंड टाइम टू ओवरकम दोस चैलेंजेस. तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चैलेंजेस सबके लिए अलग होने वाले हैं. वो चैलेंजेस के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड इनफ टू ओवरकम दोस चैलेंजेस. बहुत लोगों के लिए स्टेज फियर भी होता है कि हाँ लाइक इट्स नॉट इजी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड और या गिविंग प्रेजेंटेशन एंड ऑल, इट मेक देम नर्वस. बट जितना आप करोगे उतना आपका वो कम होता जाएगा. सो मेरे लिए भी इजी था कि क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस. या मैं अंडर कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं इंग्लिश इतना अच्छे से नहीं बोल पाऊंगा, तो मेरे को फियर आ जाता है. किसी के लिए और कोई नर्वसनेस पॉइंट आ जाती है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग. तो या यू हैव टू डू दिस, लाइक आपको मतलब कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलना होगा और वो चैलेंज को क्रैक करना होगा. तो या मेक सेंस. एक सवाल है जिसका जवाब yes और no ही होगा. I am assuming it is yes. I am auditing a corporate bank on behalf of a CA firm for 2 years and have knowledge of QMS, PMS, and risk rating. Will it help me in credit analysis? From my side, the answer is yes. Yeah, surely. All right.
एक सवाल है सौरभ का, थोड़ा सा मतलब टेक्निकल सवाल है. आई डोंट नो वेदर ऑन दिस प्लेटफॉर्म वी वुड बी एबल टू टेक दिस क्वेश्चन, बट आई जस्ट वांट टू रीड द क्वेश्चन. फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन, हाउ if minority set a high price for its share and buyer company not feel good at the price, how investment banker manage this situation to get a preferable price set? So my understanding is it's more of a negotiation and speculation on the financial modeling perspective and the valuation perspective, which is what I have seen on table many times in mergers and acquisitions. And I think it's a bit technical question, but yeah, fundamentally it's the skill set of an investment banker to understand the sector, number one, to understand the current scenario of the buyer and seller, and third is definitely the negotiation. So I think that's how it becomes. Yeah. Chintan, you want to add anything? I think it's a very generic question. Yeah. Yeah. Yeah, it's pretty much cleared, I'll say. You have covered everything. Okay, cool. So there is Pawan ka question hai, what are skill sets required for financial analysts apart from skill edge? My answer to that is it's not about skill edge, it's about the skills required. As a financial analyst, the skills required are common. It's about how are you getting trained on those skills? Because fundamentally the skills are the same, those 6-7 skills. उसमें से 2-3 skills में आपको master होना पड़ेगा. चाहे आप रिस्क मैनेजमेंट बोलो, फाइनेंशियल मॉडलिंग बोलो, रेशियो एनालिसिस बोलो, एक्सेल बोलो, these are the skills required when you are want to begin your career as a financial analyst. Now उसमें से कौन से skills में आप अच्छे हो गए हो और आप बता पा रहे हो इतनी confident है, I think that's how it is. Chintan, am I appropriate in answering this? Yeah, exactly. It's all about कि आप स्किल्स के लिए रेडी हो और लाइक या 5 या 6 स्किल्स हैं जो फाइनेंस के लिए, कोरली फाइनेंस के रिलेटेड है. उसमें से आप अपने को जो प्रोफाइल्स में देखना चाहते हो उसके लिए वो उसमें से कुछ स्किल्स आप अपनी चॉइस करके उसमें मास्टर करो. लाइक आनी सब थोड़ी चाहिए, बट मास्टर किसमें करना है वो योर चॉइस है. Absolutely. Akhilesh Pandey का सवाल है, he's doing a program in Skillet and he's from a tier 3 college. He's like how to take this from CA and CFA. मुझे सवाल नहीं समझ में आया, but मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने MBA किया हुआ है, he's doing a program and he's asking मैं CA और CFA कैसे करूं या how to take advantage, ऐसा कुछ वो कहना चाहते हैं. He's not very clear about the question. Yeah, but these are two different, मतलब ये कोई comparison नहीं है, they are two different things. आपको exactly. करियर में आगे मतलब करियर में आगे बढ़ने के लिए ये चीजें करनी पड़ेगी और जब आप तैयार रहोगे माइंडसेट वाइज तभी आप ये चीजें करोगे. बिकॉज वन, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग, सेकंड, these are also expensive, and third, you need to have the right mindset. मतलब you just can't apply to CFA level 1 if you don't know the basics and don't have the, because Chintan, I think you are level 2 candidate, right? If I'm not wrong. As far as the CFA is concerned. So I'm sure you also second this thought that you need to have the right mindset and the basics in place and some industry experience to build from where you want to do these professional programs, correct? Yeah, exactly. CA and CFA and all MBA सब मतलब like it will help you to gain your knowledge in terms like curriculum की बात हो गई. Skills and curriculum are two different things. आपको एक knowledge मिलेगी और skill से आपका एक skill set ready होगा, be it Excel related, modeling related or anything. Yeah. पवन का सवाल है व्हाट आर द टेक्निकल स्किल्स. पवन, हमने जितनी बात की ना ये रेशियो एनालिसिस, ये सब टेक्निकल स्किल्स ही बोलते हैं, इनको टेक्निकल स्किल्स बोलते हैं. एंड सॉफ्ट स्किल्स पार्ट बिकम्स द कम्युनिकेशन एंड द नॉन वर्बल पार्ट बिकम्स द सॉफ्ट स्किल पार्ट. टेक्निकल स्किल्स आर ऑल दीज फंडामेंटल रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस, these are all part of technical skills. Ratio analysis, modeling, जो बार-बार Chintan कह रहे हैं. Quickly moving to next question, Dipali. In current situation, it is very difficult to start career as a fresher. Please guide me on that. Yes, and that is why you need to have the relevant skills. What Chintan sir has been talking about for so many times. Am I right, Chintan? Yeah. That's how it is, right? Then the question is Amosh and Mayur. How Python finance help in career boost, and without MBA only getting skills, does it help to get higher position in the sector? Question 2 मैं जवाब दे देता हूँ. Question 1 Chintan can add. मतलब मैं दोनों का perspective देता हूँ. See, MBA or without MBA is not a question. The point is when you start your career, you need to have the right skill set. That's number 1. Number 2, Amosh, ये मेरा experience है interacting with more than 10 lakh students. जब आप 3-4 साल के हो जाते हो ना, तब MBA पता है क्या देता है? MBA आपको ability to take decisions देता है at tough situations.
एमबीए आपको देता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को और अच्छे से समझने का। इसीलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ किसी को भी कि अगर आपको एमबीए करना है, प्लीज डू सो वंस यू हैव 2-3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री। तब आप ज्यादा लेवरेज कर पाओगे इस एमबीए को, एंड आपको एमबीए का ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग मोर एज अ लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल टुडे इज नॉट अबाउट मैनेजिंग पीपल, लीडरशिप स्किल टुडे इज मोर अबाउट मैनेजिंग data and taking decisions at various levels. So that's my answer. It's not about with or without MBA. A higher position without higher position is not the point. Point is when you, as you grow up the ladder, you obviously require various skill sets. Either you get those skill sets without a degree, or you get the skill set by doing a professional degree. मैं आपको एक perspective देता हूँ। 25 years से लेकर 40 years तक, उन 15 सालों में आपको 4 बार मिनिमम स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। वो आप सर्टिफिकेशन के थ्रू कर रहे हो या प्रोफेशनल डिग्री के थ्रू कर रहे हो, बट दैट्स द डेटा। दिस डेटा इज माय ऑब्जर्वेशन ऑफ 17 years। आल्सो दिस डेटा इज अवेलेबल इन लिंक्डइन। आई एम श्योर चिंतन विल एग्री टू दैट, बिकॉज वो खुद कर रहे हैं अपना स्किल डेवलपमेंट। और रही बात अमोश, आपने पूछा पाइथन फाइनेंस के बारे में, सो आई विल जस्ट ऐड टू दैट पॉइंट बिकॉज चिंतन ने भी ये बात बोली है। इफ यू रियलाइज व्हाट चिंतन सर हैज सेड कि you need to enter the company as an analyst when you want to enter the company, तब शायद पाइथन की जरूरत नहीं है, because the company is not expecting you to know Python. But once you enter the company, आपने बता दिया कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज और स्किल्स हैं जो बाकी लोगों से अलग हैं। एक बार मैं एंटर हो गया, फिर ऑब्वियसली आई हैव टू अपग्रेड माई सेल्फ, जहां पे पाइथन भी आएगा, जहां पे वीबीए भी आएगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। चिंतन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? So once you join the company, वहां पे या फिर आपका जो भी करियर पाथ है वहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्योंकि आजकल बहुत नीश मार्केट बन गया और बहुत डिमांडिंग भी है, जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती हो और साथ में आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हो, तो if you will be able to relate that skill set with your financing work which you are doing for that team or for that profile, then surely it's going to help. But rather than Python, I'll say that SQL is more useful. The reason I is, was about to say that. Yeah, I was about to say that. Yeah. so the reason is कि अभी क्या होता है कि कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी से उनका इतना डेटा सेट होता है। SQL is more about data management और data storage place, जो कोडिंग के थ्रू आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस डेटा को फिल्टर कर सकते हो, वो जो भी है उसको मतलब लाइक डेटा को पुल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो डेटा के रिलेटेड। तो अभी नॉर्मली एक्सेल में 1 मिलियन रोज होती है और उसकी अपनी एक लिमिटेशन होती है डेटा को रखने की। एक टाइम के आगे एक्सेल नहीं कैरी कर सकता, बट आजकल लाइक इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल एंड अमेजॉन, उनके मिलियंस ट्रांजेक्शंस हैं, तो फिर उस ट्रांजेक्शंस को आप एक्सेल में नहीं स्टोर कर सकते, तो फिर उसका ऑल्टरनेटिव क्या है? एज़्योर क्लाउड हो गया या फिर ये सीक्वल हो गया। तो सीक्वल में आप डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, तो आप उस सीक्वल में डेटाबेस रख रहे हो, बहुत ज्यादा हेफ्टी डेटा सेट रख रहा है, उसको आप डायरेक्टली पावर बीआई में पुल कर सकते हो, उसमें कुछ फिल्टर करके उसको एक्सेल में भी पुल कर सकते हो। तो इफ यू नोइंग सम बेसिक ऑफ सीक्वल, देन या इट विल हेल्प, बट it's not very important for joining your career, but it's more about later on your career, as I earlier stated. Absolutely. I was about to say the SQL becomes so. Chintan, just to add, in our new format of the program, we have added SQL for all the top performers in the batch, because the fundamentally point यही है कि हर एक को हर चीज नहीं सिखा सकते, क्योंकि अगर बेसिक से नहीं पता, आपको एक्सेल नहीं आता है उस लेवल पे और SQL सीख रहे हो आप, doesn't matter, right? ये वही बात हो गई कि आप सबको जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहते हो कि आपको लिखना है सिर्फ, पर इंडस्ट्री में सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू शो what you know, right? So at least अगर आपको बेसिक बता दो तो बात बन जाएगी। Yeah, and then at the same time, it's all about interest as well. Like coding is very different from financing and all. आपका इंटरेस्ट वहाँ फॉल होता है कि नहीं? अगर आपका इंटरेस्ट फॉल नहीं होता तो हम फोर्सफुली क्यों, मतलब फोर्सफुली एक करिकुलम का पार्ट रख के किसी पे डालना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। देन जो भी इंटरेस्टेड है उनको फोकस करके उन पे वो लाइक पुट इन करना। बट या दैट्स राइट। So I think इसके कुछ और सवाल भी हैं, but I think some of the questions are irrelevant, that how Indians are failing to beat consulting firms like Big Four and stuff. I think this is not the platform to ask questions about why Indians are failing, Akash. ये एकदम अलग ही ऑर्बिट का सवाल है। अगर आपको उसमें डिस्कस करना है, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, बिकॉज knowing so many CEOs who are trying to build auditing firms like Deloitte and KPMG, you can definitely discuss that with me, but I think that's not an appropriate question here. Online MBA versus regular MBA,
अगेन दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू आस्क दैट क्वेश्चन, बिकॉज उसके लिए चिंतन सर को आपके बारे में पहले जानना पड़ेगा कि आपने क्या किया है. अगर आप फ्रेशर हो तो इट इज ऑलवेज रेगुलर एमबीए. ऑनलाइन एमबीए डजंट ऐड एनी वैल्यू. और अगर आप मुझसे पूछोगे, रेगुलर एमबीए फ्रॉम टॉप 50 विल ऐड वैल्यू, अदरवाइज इट एड्स नो वैल्यू. इट्स जस्ट ए डिग्री. वो अगर आप गौर करो, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो तो फिर आप वो जो 10% लोग होते हैं टॉप 50 में नहीं जाने के बाद भी, वो 10% लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर चिंतन सर की तरह अपने से मेहनत करके दे बिल्ड देयर ओन करियर. प्लीज अंडरस्टैंड दैट फैक्ट. Otherwise, it is important to build. अगर करना है तो maybe a program that helps you in doing skill development rather than doing an MBA. वो MBA आज एक डिग्री रह गई है और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से समझती है. That's, I think that's how the answer is. I think Chintan, I think that is it. Maybe one or two questions more, but let's take one more question and we'll close it. किसी ने पूछा है इंग्लिश क्लियर को कैसे हटाना है, क्या करना है. I think those things have been covered at many places. But ठीक है. And we work on that with that. So Prashant एक सवाल ले लेते हैं. I am working as an equity dealer in Bonanza portfolio. What further step I have to take to boost my career? Please guide. I think you have answered it, but anyway you can repeat those answers because every answer comes with skills. So he is into Bonanza portfolio. That's what he's asked. Okay. I'm working as an equity dealer in Bonanza portfolio. What further step I have to take to boost my career? Okay, got it. So see, like if you have that practical exposure, आपके पास वो practical exposure है जो as an equity dealer जो आप कर रहे थे, तो अभी next आपका like it's more about creating those impacting research. Like अगर आप उसमें अगर आगे pursue करना चाहते हो तो फिर आप एक कोई role को पकड़ो in the sense कि like get placed to any of the role which is related to that where you want to go ahead. Then yeah, obviously बाद में वो वही है कि जो दिखता है वही बिकता है करके वो करने वाली बात है. जो आप काम करके दिखाओगे, जो आप आपकी रिसर्च पुट इन करोगे, वो इम्पोर्टेंट है. तो अभी आपने उसका एक्सपीरियंस है, आपके पास उसकी नॉलेज, उसके स्किल सेट्स है, तो व्हाट नेक्स्ट इज कि परफॉर्म ऑन दो स्किल सेट्स, डू सम relevant important research which will help your firm to get the deals or get your clients invest on those research and then मतलब जो भी है, मतलब in short पॉजिटिव रिकमेंडेशंस जितने ज्यादा आप करोगे उतना आपको ग्रो होने में हेल्प मिलेगी. तो या देन मेक योरसेल्फ लाइक, फिर बाद में या डू द लाइक परफॉर्म अकॉर्डिंगली एंड देन डू वेरी impactful research on various listed companies. Yeah, that's my take is. Perfect. So I think this is where we end. Chintan, thank you so much for your time. All the participants over here, thank you so much for. So wait for 5 minutes more. Sonia ma'am will give the vote of thanks and will send the feedback link to all of you. Please feed the feedback form. Very important for all of us to grow ahead and to understand what the things you like and what the things you would like to have more during these kind of interactions. So once again, I think over to. I may not have taken one or two questions, guys. Please understand because some of the answers are common. आपको समझ में आ ही गया होगा. कुछ आंसर्स कॉमन है और कुछ आंसर्स इस फोरम के लिए नहीं है. अगर आपको फिर भी उन सवालों के जवाब चाहिए, प्लीज गेट इन टच विद मी. आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर फॉर दोस क्वेश्चंस, राइट? But over to Sonia ma'am for the vote of thanks before we close the session. Over to you, Sonia ma'am. Yeah, thank you so much, sir. So I would like to thank Chintan sir. Thank you so much for sharing your expertise with us and encourage our student. So thank you so much, sir. And Rohit sir also for your experience added advantage to this session. And thank you so much, students, all the students for attending our session. So we'll share the feedback form in the chat box. Please share your feedback. So we'll get to know how was your experience during the session and all. Perfect. Yeah. Chintan sir, thank you Sonia ma'am for arranging this. Thank you so much. It's always very helpful. मैं बस यही end करूँगा बोलकर कि Chintan sir have been part of this ecosystem. उन्होंने अपना career बनाया है. उनके जो वर्ड्स हैं वो काफी वैल्यूएबल वर्ड्स हैं और ये बार बार इसी बात को रीकरेक्ट करते हैं कि स्किल इज ऑलवेज प्रीडोमिनेंट ओवर एनी काइंड ऑफ डिग्री एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो करो ध्यान से करो, इज्जत से करो, 10 ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में मत आओ. इतने डिस्ट्रैक्शंस में आने का कोई फायदा नहीं है.
जो करना है ध्यान से करना है. And I'm sure Chintan sir will be in touch with us for more such sessions. We have also requested sir for mock interviews and other things. So he will be there with us as a mentor in the program going forward. But yes, thank you so much for all joining in. Thank you, sir. Thank you so much for coming on the session and it's a great interacting with you. Surely, Do you have any wise, yeah. final words? Thanks for having me in here. Yeah, and then I really like the enthusiasm of the all the students. Yeah, very relevant and important questions you have asked. And yeah, thanks for having me. Yeah. Thank you and have a good day to you. Thank you so much, everyone. Yeah. Take care. Have a good day. Bye. Bye. Students, kindly share your feedback with us. Thanks for watching. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel. And don't forget to click the bell icon. #स्किल से करियर तक हम आपके साथ हैं.